Mm. आवाज नहीं चालू करती हूँ। और अब लेना मैं और लेना यूजर की तो और Oh, bad camera. I know, and all of a sudden, like, somebody put stuff on it, so it's got all yucky. It's a lot better now. I can find it. There There you go. Great. All right. Finnegan able to make it? There's Dr. Manjanette, there's Pinnakin, Yes. there's who else is on here? Oh boy, we had an incredible time in India. Hi. Hi. how are you? Just fine. Oh my gosh. Say how are you again? How are you? Your voice is so much better. Sounding great. You sound fantastic. After So- you came and gone, my voice is become much better because I met angel. You made what? I met two angels. One is Patricia, one is Sword. Reason my voice has become very good. Wow, very Yeah. good. So what he is saying is he met two angels, Patricia and Scott, and after that his voice became much better. Okay, much better. Well, we're finally recovered from jet lag. Boy, I had no idea. I think my sleep is finally back, but it took me a long time to adjust. That 12-hour time difference is very, very difficult. Correct. So just give me 2 minutes while you talk. I'm opening my presentation for today. Okay. Oh, this presentation. So you want to talk? Well, what I'd like to say is that we had a great time. I mean, we flew into Mumbai, but it actually took us 72 hours to get to Mumbai due to plane delays and flight delays, and we missed a few flights We and missed we like had to 3 rebook four flights, connections. but we made it all work.
From Mumbai, we flew up to Jaipur. No, indoor. Indore. Indore. Yes, and then Indore, we left Indore up to Jaipur. And then from Jaipur, we went to Lucknow. And then from Lucknow, And Lucknow, we went to visited, hold on, we got, Bangalore. yep, you gotta write down who, so Bangalore. we missed part of the story. Okay, what's part of the story? Go. Well, because in Indore Mm-hmm. We met we met Smita, Dr. Smita Jain. Dr. Smita Jain, and went to her son's wedding, which was really fun. Mhm. And then in Jaipur. in Lucknow, we met, Lucknow, we met McCann. Now she was on a feeding tube, a yeah, so tracheostomy, is she, and she I don't could think not she's on here move. yet. And Where's my now phone? she's Second, back let me get my phone. walking, and she's back Yeah, so talking. skin chat, you can go ahead, he's got a slogan, so he And- can give us a story. Yes, and Nicola. pictures, Tish. बैक चेक करो इसे चेक अरे यार अमरो इधर आ इनको एक आगी दे दे हाँ मेरे को एक आगी दे दे यार तुम भी यार वैसा नहीं मतलब कैसा है मतलब ऐसा रहता है ऐसा मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबल है मेरे भाई को बोलो नन्ना hello am I audible Yes, Yeah. go right ahead, Pinnakin. yeah I just want to ask can you see the presentation Yes, Yes. Okay, thank you. So before I start the presentation, I would like to okay. All right, 1 second. All right. So first thing and foremost is the early morning, very early morning for Patricia and Tish. So I thank Patricia and Tish with joint hands. Namaskar Namaskar. for Namaskar from all of us, Patricia and Scott. And I thank you and thank you all the way. Thank Nikhil ji, आप म्यूट कीजिए please. Thank you both of you. you know, you're a coming to host, you India. can mute him, Pinnakin. Yeah. You could, just to let you know, yeah, he's muted now, but you can mute him. Uh, Go ahead, Pinnakin. Yeah, so thank you, Trish, and thank you, Scott, for all the support you have given me and my group. Well, thank you, Thank you. Pinnakin, And- for doing this group, because we would not have found all of you guys, and Pinnakin, you are amazing. Yes. You know, leading this group of people, because we keep finding out more stuff. And we found out more stuff in India that I think is going to make a big difference in people healing. So it's very, very important. Go ahead, Pinnakin. And I would like to even add that this group has given me a lot of hope, lot of positivity, a lot of happiness, because now we are not a group, but we are now a family among ourselves. Yeah. Yes. And we loved meeting Muskan and Dr. Jawahar and Dr. Manjunath and Devendra and you know, it's everybody we met just was amazing. And Yeah. all the families were like the best. It was Yes. great. And your family is amazing also. All of them. Pinnakin. Yeah, everybody, it was just very, everyone felt us, we felt very welcome. We thoroughly enjoyed India. It is colorful and moving all the time. And what a fun country you guys live in. I thought it was fascinating, the variety of how people approach this disease and how they healed. There's not just a one path, one fix. You And that's literally the same as have- what we found you here have also. your own journey. Yes, they all took on their own journey and their own path to healing. Yes, thank you very much again. And
now I would like the dish and the spot. Can you add a little bit more of your knowledge, what you have gained in all these years about ALS and MND? Maybe a little bit about ALS and MND. Okay, so the first thing, number one, is the mind. Okay, and I think everyone, Devendra, Muskan, Dr. Jawahar, and Dr. Manganath all really said the same thing, and Pinnakin, is the mindset. We knew that before, and yet everything that when we talked to all of you in India, it just confirmed it. That number one is the mind. Number two, India actually made us, number two used to be mold. Okay, that used to be mold, and because it used to be heavy metals, whatever, but I think number two has now moved up to insulin resistance. So what we found out is that a lot of India is, I think, even worse than the US. The three worst countries in the whole world for diabetes are the US, Diabetes. India, Yeah, and Mexico. Mexico. But I think India is even worse than the US. I don't know, So- there's a lot of diabetes that, So- I was surprised. And the thing is, diabetes is 100% reversible. There is no reason for anyone to ever be on diabetic medication if you're type 2. If you're type 1, that's different if you get it as a small child. But if you're type 2, no one should be insulin resistant. So I would say the most important thing that we've learned, and that's moved up. So after, 10, 14 years, yeah, that's type- moved up to number 2 is now insulin resistance. It's controlling your blood sugar, because people don't understand that you control eat the a diet. piece of fruit, then your blood sugar goes up. That's okay. Your blood sugar going up is okay. This is what the problem is. When you're a child, you produce a little bit of insulin, on and the pancreas, sugar comes right back down. because the pancreas can And handle it. there's no harm done to your body. As you get old, and now it's happening to teenagers and 20-year-olds. I mean, it's happening younger. You're getting obesity at younger and younger ages, okay, because of all the processed foods, packaged foods we're eating. And then, so then you eat a piece of fruit, then your blood sugar goes up, and now your pancreas, because you've been overworking it, now goes up here to produce insulin. And it might stay up here for days or hours, but every moment that the insulin is up here, you are damaging your liver, your kidneys, your heart, your large intestine, your small intestine, like every part of your body, your pancreas, everything But is in you're giving and your body says, the minute you have insulin up here, your body says store fat, store fat, store fat, store fat. So you're wondering why in India, and just like the US, don't think that you guys are alone. We're both of our countries are like this. We have a really rampant obesity. I walk down the street, and I was a child, you would see a few obese people, but everyone else was just normal weight. And now you're seeing more obesity, and not just that, you can be skinny and be insulin resistant. So just because you're normal weight doesn't mean you're insulin resistant. So I'm going to put in the a lot chat. of it is the foods that break down, that causes insulin spikes, like your grains, your breads, your actual rice can break down, and that's causing a sugar effect on the pancreas and long-term use. Sometimes the food sensitivities that we have are the foods that we love the most and eat the most. So we have to be very careful with our diet and what we're eating, and does that break down into sugar that would cause an insulin spike? So I've been asking Pinnakin for a week, since before we left India. You look at the chat, you still have not sent me your triglycerides and your HDL. Okay. These numbers, everybody Okay, should know the so numbers. everybody should have this. So anytime you do blood work, you have your triglycerides. You take your triglycerides,
divided by your HDL, and it should be less than 1.5. So this is a problem. So if your triglycerides, your triglycerides might look good at 75, but if your HDL is down to 30, then you're 2.5 times. You see what I mean? And that's hard on the pancreas. Your pancreas is so anyway, the solution and it's storing fats and it's causing diabetes reaction. is ketogenic, which is equals carbs is less than 25 grams per day. And you guys are going to go nuts. You're going to say, there's no way on an Indian diet that we can possibly eat 25 grams or fewer. But people do it, and you can do it. If you're willing to eat dairy, if you can eat whey, you can do it. So But you guys figure this out diet-wise as a group, because you know you're Indian, you know what your group says. There's no reason you look up how many carbs are. So As soon as give you- me one food, Pinnakin, in India. well, as soon as you start doing low carb, the belly fat starts going down. The body starts working its own Oh. metabolism differently. The other thing, I'm going to tell you kind of what did high fat. Okay. And then protein. I just did this with Diana because I was working with a vegetarian. Hold it. Well, your high fats, like your medium It's not- chain so- triglycerides, like coconut oil, and You that can have as much as good. 3 Coconut oil is very good. tablespoons of coconut oil, and you have to work up slowly. Oil per meal. Even There's going to be even controversy. ghee, in nutritional even doctors. homemade cow ghee. They don't know nutrition. What was that, Pinnakin? Could you say that again? Yeah, even homemade cow ghee. I missed what you said, Finnegan. Let me look at you. I Go said, ahead. even homemade cow ghee is very good for health. Homemade Good what? fat. Ghee, cow Ghee. ghee. Homemade ghee Ghee- is awesome. Ghee is fantastic, and it's Excuse me. all over India. It's Ghee beautiful. is even better Mhm. than coconut oil, okay? Just to let you know. Okay? Yeah. Now, let me say, I'm And gonna ghee is just, good for the brain because our brain is made up of that type of cholesterol. And so, I mean, ghee is one of the key things that helps your neurons fire, which is important. Yeah. And they keep saying that it's a neurological disease, a neurological disease. Well, when we take care of our neurons, we help fight this disease. And a lot of people don't realize that. They always say, oh, you need to get rid of your fats, get rid of your fats. When you're on a cholesterol lowering medication, say Lipitor or something of that nature, any type of, statin drug, it lowers the cholesterol from the brain and it does not distinguish the good cholesterol from the bad cholesterol. Your brain needs the good cholesterol. And what happens in the long-term use of these statin drugs, all of a sudden Alzheimer's will kick in or you'll lose your memory. Dr. Dwayne Graveline, who wrote the book Lipitor, Thief of Memory, he's a NASA astronaut. He said he was in contact with over 500 people that lost the use of their legs due to long-term use of statin drugs. It's a real damage that these statins are doing globally. So we do not want to lower the good cholesterol from the brain. We want the medium chain triglycerides in the brain. Okay. Oh, go right ahead, Pinnakin. I'm sorry. Yeah. I'm looking for my notes from Diana because, so I'm gonna give you an example of someone, of how we can do this whole, oh, it's in the other one. It's probably this one. Okay. So, if you are 150 pounds, which is how many kilos? Give me an example of a man with, say men versus women. There are more men here, so let's do a man. What is a good weight that a lot of pals are at? How many kilos? Like Around- 60 kilos? Around 60, 65 kilos. Okay, 65. so if you are 60
kilograms. Okay, you can put that in. Yeah. You need 1.5 times protein Oh, equals, yes. just a minute, Men- equals, Men are not getting enough protein. yeah, It's a equals thing. 90 grams of protein. So take a look at my chat. So you need, I don't need your cholesterol, Dr. Manjaneth. I just need your HDL, your high density lipoprotein. Yes, HDL. If you could send your HDL, that would be great. Thank you. Then we'll use Dr. Manjaneth as an HDL is example. 35. Yeah, his HDL. Oh, but HDL. cholesterol is I need to know what triglycerides are. Like cholesterol is HDL plus LDL, but I need triglycerides. Do you guys measure triglycerides in India? Yeah, they do measure. It's a Okay, so specialty Dr. test. Manjaneth, I need triglycerides. If you could look them up and put them in the chat, that would be great. Okay, so then you're good. That's 90. Then you're going to need at least equivalent to that in fat. So there's 90 grams of protein, 100 plus in fat. I mean, in reality, that's And 25 in carbohydrates. packages. Though. That's no big deal. But It's you have very to keep the easy to carbs- get that. Have to keep the Great. carbs low though. So You have now- no breaded food and I'm going to say 0 to 25 in carbohydrates. So that's the request. Believe it or not, the human body needs 0 carbohydrates. And it needs, but it needs fat and it needs protein. Most people are not getting enough protein. So if you look at the amount of protein that you're getting, and you can Google it. So give me a food in India that's common, that you guys eat a lot. that's high in protein. Anything. What's a good high protein food, Pinnakin? High protein food is a paneer. Paneer. Okay, very great. regular. I'm gonna look Paneer. up paneer. Okay. Like So palak paneer or yeah, so I'm gonna look up paneer. Carbohydrates, That'd be tikka, but fat, protein. Just I'm kind of curious as to what it is. Okay, are you ready? So paneer, now it doesn't say how much. It says protein has 25 grams. That's a really good one. yeah, paneer. Boy, paneer is good. So can you make me co-host? 25 grams of fat. Yeah, I already made you. Oh, you're so good. Okay. So share your screen. Yeah. It has 25 grams of So I just looked up paneer, and it doesn't say how much, but the fat is good. this is paneer and tofu. I don't know, but anyway, so you're just saying, so, oh, this is paneer, has 25 grams of protein, 25 grams of fat, and 3.75 grams of carbohydrates. That's awesome. Paneer's great. That's a good food, right? Because it's high in fat, high in protein, and low in carbohydrates. Okay. Tofu also, except that it has soy, but tofu is not as good. It's missing a bunch of fat, but you could make up the fat with, with ghee or coconut oil Right. or Correct. avocado. Okay. So these are two foods that are really good. So you have to find, now let's go look up rice. So instead of putting paneer, I hate to even look at rice. You want to minimize rice, and you'll see why. It's not like you can't have any, but look, It's only 4.6. it has 4.6 grams of in 1 cup, 4.6, but 41. You can't have Yeah. that. You forget rice, guys. Rice is causing You're insulin better spike. off not having any rice. But if you have rice, have a little bit, and it's a treat. Rice is an insulin Okay, spike. rice has now become a dessert. Okay, because Yeah. 1 cup you've used up more than your allowable grams. So the nice thing about Google is you can look up any of these foods. But the main thing is, let's go back to the chat. You want to get if you're 60 kilograms, if you're a man, you want to get 90 grams of protein. You can have as much fat as you want,
I wrote 100 plus, so 100 or more. You can have 110, 120. The fat That's gonna feeds your neurons. and it fills you up. It won't make you feel hungry. all Yeah, the the fat, time. oh, you're never hungry. Fat. It's awesome. So you don't have a tendency to want to eat more, because what rice is like a filler. The and you rice have a just makes you tendency hungry. to want to eat more. Then once you start eating it, you're going to want to eat more. It's almost like a Correct. sugar addiction, because rice does break down into the carbs So and sugar. this is Just- per day. You want to also, you don't want to eat 5 little meals. You want to eat 3 meals a day: breakfast, lunch, and dinner. Forget these little snack things. No snacks, because you want your body to rest. So I'm going to also write 4 hours in between Me- meals. Okay, so Dr. Manjanath, thank you so much for sharing your numbers. So if check we this look right. at this, let's go to the calculator. Let's go to the calculator. Share screen. I'm going to share my calculator. So Okay. all we do is we take 124 triglycerides Oh. divided by, what happened to the chat? It disappeared. Oh, there's the chat. I lost it. It's underneath your. Oh, screen. it's underneath my screen. Hold on a second. Let me stop my share so I can see my chat. Divided by, 7. I don't need your LDL. I need your 35 is 35. HDL. HDL, not So the LDL. HDL is the main thing. Okay, so let's go back to sharing my screen. Go back to my calculator. So 35 is HDL. So divided by. So we divided by 35 equals. Okay, so that's 3.5. So Dr. Manjanath, and we already know he's diabetic, but what that means, Dr. Manjanath, is that your insulin levels are not being controlled as well as they should be. So even given all your medications and everything you're doing now. So what this means, this 3.54 is when you automatically increase your fats and decrease your carbohydrates naturally, these numbers will improve. I had someone, she was about 3 times 2. Her HDL in 2 months has gone from 46 to over 90. Now that's incredible in 2 months of keto. So 46 to over 90, it's more than doubled. So we all know that we want more, and obviously it's more complex than that, because you need to know the density. You need to know the size, the particle size, but I'm not going to go into the particle size of the HDL and the LDL. But the point is that all of you should look up your blood work. And if you're more than 1.5, that's a big warning sign. And what you want to do is, and Dr. Manjanath, I want to thank you. Guys, we have a beautiful, amazing, humble, wise doctor here who just shared his numbers with you. So he's an MD, he's very educated, he's an expert, and he was open enough to share his numbers. So thank you, Dr. Manjanath, because he's saying, hey, my diabetes is not controlled and I'm a doctor. Most of what we learned, by the way, on this is from doctors who told their patients, do this, do this, do this. And then they became diabetic themselves and they did this, this, and this. And like, wait a minute, it didn't work. Why didn't it work? I've been telling my patients this for 20 years and now it's happening to me and I can't control my blood sugar. So this is what we found that works. And this is happening all over the world. All over the world. And Brazil, Correct. those that were very thin due to their ALS, they've gained their weight back, but they're gaining muscle. Yeah. The increase of the proteins. They're gaining So- back in muscle. They're also gaining back sharpness with their mind, and that's due to the good fats in the brain. The brain needs that cholesterol. It really does. So And- Pennican, do you want to show us the pictures that I sent you, or do you want me to show them? And getting off the stack. You want us to give a Yeah. little detail about the pictures that we took?
Yeah, but I could not incorporate that in my slideshow. Can you show Oh, but it? I can before we leave. You want me to do that? But Yeah, but before we leave, I want to know one more thing from you Okay. guys. That what do you think about ALS? How is your experience with all the reversals you have met? wow, we Number met. one, we already know of all of the people we've met, what was the number one factor that made the most difference? The number one factor that made the most difference, especially initially, was hope, first of all. The second thing, Which is in mindset. which is a mindset, but the second thing that was very important, each one of them dismissed traditional neurologist thinking. They did One not go second. No, path One, or one second. accept Let the me, prognosis that was yeah, given. yeah, let me translate that in Hindi, the local language. Okay. Let me translate. तो ये पेट्रिशिया और स्कॉट ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जिनको मिला है, जिन जिन एएलएस रिवर्सल को वो मिले हैं, What they did. मेरे हिसाब से 40-50 से ज्यादा लोगों को वो मिले हैं और उन्होंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है ओवर माइंडसेट, ओवर पॉजिटिविटी, अपने माइंड का थिंकिंग। आप अपने पावर ऑफ माइंड यूज कर सके तो अपने को हील करने के लिए you can use your power of mind to heal yourself. That is very very important. आपको ध्यान में रखना है, आपको भी, आपको ये ध्यान रखना है, मंजुनाथ जी आप सुन रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीमारी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, आपको आप बीमारी को कंट्रोल करना चाहिए। Go ahead, Scott and Rish. Yes, and they also took control of their health by becoming president of their own healing. They looked at everyone else as being advisors, and they did with what resonated with them. That was very important because some of the decisions on natural and holistic healing can be controversial to traditional university taught medicine. I'll So let you interpret that. Go ahead. को ये भी ध्यान में रखना है कि लोगों ने अपना हीलिंग अपने हाथों में लिया है, वो दे बिकेम देयर ओन डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल, एंड दे स्टार्टेड होलिस्टिक हीलिंग, बिकॉज आपको भी पता है ट्रेडिशनल वे एंड मेथड्स ऑफ हीलिंग इंडिया में भी बहुत है। हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है, आप बोलो वो सब कुछ इंडिया के पास है, बस आपको एक बार ठान लेना है कि मुझे ये होना है। You have to anyhow make up in your mind that whatever happens, I am going to heal. That is the main thing that you have to understand and tell your family. Or thank you, Tishan God. okay, so the other Tishan. thing, if you kind of go over that one, these are the slides and you've seen these anyway, Pinnakin, but I would say this thing, if people are under stress, you cannot think about stress and gratitude at the same time. So, you know, if you know, what I give on these slides at the beginning, I think if you have this in your group and just understand that all of this is required, and you can explain to them, and you know, you can look at this another time, Pinnakin, I can send you these slides so you can put them in Hindi if you want. Yeah, that would be much better. Yes, so I will let you, these basic slides and this too, I think these are the most, I wouldn't put them in this presentation every week if it wasn't important. Tell them it's like two wings of a bird. If you have, this is what Sergio told us, you have a bird and the bird has two wings, okay? If the bird is flying and this is the mind and this is the physical.
So if you just do the mind, but you ignore your diet, you're going to fly in circles. If you just do the diet and the supplements, but you're not doing anything with the mind, you're going to fly in circles. The only way to fly is to keep both wings. Can you explain that in Correct. Hindi? हाँ, आपको ये बताना चाहते हैं सर जो ने उनको एग्जाम्पल दिया था ईगल का 2 विंग्स होते हैं ईगल के हम बाज बोलते हैं ना बाज पक्षी उसके 2 विंग्स होते हैं अगर एक ही उसका विंग वो उड़ाएगा तो एक वन विंग इज माइंड एंड द सेकंड विंग इज फिजिकल बॉडी तो अगर आप अपने एक विंग को हिलाएंगे तो आप अगर फिजिकल बॉडी को निग्लेक्ट करेंगे तो आप उड़ नहीं पाएंगे ऐसे अगर आप सिर्फ फिजिकल बॉडी को आप मूव करेंगे ट्रीट करेंगे लेकिन आप अपने माइंड को हील नहीं करेंगे तो भी आप नहीं ठीक हो पाएंगे आपको भी पता है आज सोशल मीडिया के जमाने में नेगेटिव न्यूज नेगेटिव बहुत सारी चीजें आपको ये भी ध्यान रखना है आपके दोनों पंखों को आपको उड़ाना है और आप अपने आप को ठीक कर सकते हो एंड थैंक यू डिश thank you Dish. I would like to add one more thing today we complete for 2 years of continuous speech therapy with the My India group. 2 years. That's great. So do you want to see a few pictures before we leave? Yeah, I want to see. Please show all the pictures. और मैं now I proclaim Dr. Manjunath as the laughing and the traveling doctor. Okay. All right. So this is Muskan with Scott. There's Scott. This is at Devendra. Devendra. So there's Devendra right here. They're not in any order. Please tell them in Hindu that they're not in any order, please. I ये couldn't get कोई them. पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है आगे पीछे है आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए Okay. थैंक यू This is at Jawal. Dr. Jawal. There is Dr. Manjunath. And that's Dr. Manjunath's kids. And that's Devendra. We're back at Devendra's house. And there's Okay. I don't know why they wouldn't go put them in order. I don't Oh, understand. this is Dr. Jawar. Oh, this is Dr. Jawar and Dr. Jawar and his wonderful and his wife. with Yeah, his and his son. wonderful son. Filming for Yes. documentary. Yes. For documentary. And this is the Interpreter. aunt or the cousin. She's like kind of a cousin of Muskan. And then this Muskan. is Pinikin's son, Yes. one of his 2 kids. Five. There's both of his Dad, kids this is in and his five. dad, Uh-huh. Pinikin's dad, And 2 sons. and 2 sons. Yeah. Yep. And there's Javar. And this is He reads a lot. It's Devendra. important that he does his Devendra is big on research. reading. He does his own research Yeah, a lot, and he studies nutrition. Yeah. yeah. So, he, now we're back. Devendra is my bookaholic Kung Fu Panda. Yes, but he's very wise. That's true. Devendra is very wise. He says, Yeah. forget about ALS and live your life. But just the main focus, it's like you've got to focus on ALS, but you also have to focus on living your life. Make sure you focus your living on life. Don't focus on ALS. Can you translate that last Keep piece? happiness. That's what in that's your what life. Devendra said. You can easily get depressed, but you have to stay positive. So just tell him about Yeah. the focus on living your life, not just ALS. बस ये बोल रही है कि देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी के बारे में जीना चाहिए जिंदगी जीना चाहिए और बीमारी को भूल जाना चाहिए फॉरगेट योर डिसीज और आप है ना अपने जिंदगी को हंसी खुशी से जियो आपकी जिंदगी आपको पक्का वापस मिलेगी थैंक यू टिश Okay, so he did do research, but it wasn't the main thing in his life. The main thing was living. Okay, करेक्ट so there's Dr. No, no, Javar, it's and that's this is the son and the son and his daughter-in-law.
So that's his, and then, so I think we have the whole family. Oh, his dad's taking the Yeah. picture. Okay. Yeah. So, Yes, there's Dr. Mann. oh, there's Dr. Manjaneth, and they kept giving us presents. So that was great. All right. And there's more with and then we're back there, and there's the garden was beautiful. Oh, this is Oh, Pinnakin working his hands. exercising. Yes. This is Pinnakin doing his handwork. And more pictures and oh, this is Muskan and her parents, and this is her friend, and her sister's taking the pictures. Her parents Yeah. saved her life, no question. And They Muskan wouldn't listen could not to move the at doctor. all. She He- could not move at all. Yeah. Oh, you know what I missed? I didn't get her in the trach. She was in a tracheostomy, Yeah. a feeding I mean, tube, and so, could not move. This is we met this. They live only very close to where Devendra lives. Yes. So Yeah. he's had ALS for how long, Pinnakin? Yeah. Yeah. Around Maybe 7 or 8 5 years. Ambarati. 5 They years. live in around Ambarati 5 also, years. yeah. Yeah, so Yeah. And then, so just more pictures, That's more Ambarati right pictures. there. Yeah, I mean, so Yeah. so actually Devendra's taller than Scott. So okay, and then they this is we went out to breakfast, and I think we're done. Oh yeah, this is just the interviews and more talking and more pictures. We just kind of scroll through here. Oh, the view. Look at the view from Joe's. Oh, it was beautiful. See this view? It's gorgeous. We're 22 stories up. This was a great view. We loved it. This is in This is Bangalore. Bangalore. Bengaluru. Okay. Yes. And that's back in Mumbai. And this is back in Bangalore again. Yeah, this exercise machines that Yeah. Dr. We were just chatting. yeah. Okay, so these are just pictures, and I'm sorry they're not in the right order, but I couldn't get them in order. that is okay. That is okay. So these are just pictures that we took while we were there. Okay, I think we're Yeah. almost done. Oh, this is Pinnakin Street. Yeah. I love your street, Pinnakin. Yeah. Oh, yeah. It's beautiful. Yeah. He Thank lives on a you. beautiful street. Okay, I think, oh, this is Pinnakin, almost done. This is Pinnakin getting up There's therapy. and getting ready for his therapy. Therapy. And then this is Devendra's family and his mom Right. over here. And I think we're done, almost done. We took a lot of pictures here. Oh, this was the airport in Mumbai when we left. And then I think we're done. Okay, all set. Okay. Okay. So, Okay. thank you, Daisy and Scott. Thank you so much. And I would like to add one last thing. From today, I can say that MND stands for Memories Never Die. Yeah. Memories Mhm. never die. And so besides the mind, we're gonna up your protein, up your fat, and dump your carbohydrates. So guys, you can Google everything you eat and the nice thing is you guys, all of you men in India are very lucky because you have women in India that know how to cook. Okay, it's awesome. So you can look them up and with them, and they will find beautiful, delicious food that's high in fat, high in carb and protein, and very low in carbohydrate. It will change everything. The key is low You in will feel- carbohydrates can change your life. This will Yeah. reduce inflammation. The inflammation is, just to do this, explain this. Inflammation is one of the big factors in ALS, and this diet will reduce inflammation. The diet that I wrote in the chat. Could you explain that in Hindi? No Correct. bloating, no any of that. Yeah. जो पेटिशन है चैट में लिखा हुआ है वो हमारे बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करेगा. It will reduce the inflammation. हमारे बॉडी से वही डाइट इन्फ्लेमेशन को कम करेगा. And it will heal the gut. Because और अपने हाथों की तबीयत को और भी सुधारेगा, अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा. okay, because the parasites, the viruses, and the bad bacteria feed on carbohydrates.
That's Yeah. their food. If you bring down their food, your gut's going to heal. They don't like the ghee. Yeah, they don't like fat. They Yeah. love carbohydrates. They don't like fat. So give The bad stuff and doesn't like the and ghee. then tell them that the fat is like an oil change for the brain. Say that. जो जो गुड फैट होता है ना, जैसे घी, कोकोनट ऑल दैट गुड फैट, वो हमारे ब्रेन को अच्छा होता है। और जो हमारे बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, उनको घी और ये गुड फैट अच्छा, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको सिर्फ शुगर अच्छा लगता है। तो आप शुगर को छोड़ो, stop taking sugar, and you will see your body eating itself. Okay. Thank you, Right. Tishan Scott. Yes. Just Tishan Scott, only 2-3 minutes. I'm going through my presentation. I will show you my presentation in fast forward right Oh, now. okay. Yeah, okay. Can you see my first page? Yes. By the way, positive mental attitude heals the gut also. Your thoughts heal your whole body, including your gut. Okay. Beautiful graphic. By the way, the other thing I thought to say is that we learned something from every person. Dr. Manjanez has this great routine in the morning, and It's the amazing. fact that he has reversed his ALS with his mind is amazing to me. He spends this whole routine in the morning, and he is reversing disease with his mind. There's a mantra. It's incredible what he does. It's very impressive. So, okay. Oh, this is your Dr. Manjunath's favorite line. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, Yeah. trees, forests, rivers, lakes, ocean, plants were also harmed. Okay. So, By the way, Dr. being Javar, MND, same thing. He healed with his mind also. Just to be very clear on that. correct. Everybody did. Yeah. MND stands for मैं नहीं डरता. Mind never dies. Music and dance. And that today's one memory never dies. So I invited Scott and Tish to India. तो हम हाथ जोड़ के उनको अतिथि देवो भव करते हैं. Thank you for coming to India. Thank you very much. Well, thank you for inviting us. It was a great trip. We thoroughly enjoyed it. And it was a much pleasure enjoying with you. Only for one day, I enjoyed a lot. Thank you again. Thank you. Lifelong memory. Lifelong memory. Yes. Yes, correct, Manjunath ji. आपने बराबर बोला. Live from the memory. देखो, मंजुनाथ जी आ गए. Thank you, मंजुनाथ जी. Devendra ji from Amravati. By the way, Patish, you look very good in this dress. अखिलेश जी और उनका फैमिली फ्रॉम अमरावती. ओके, सो अभी मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ.
हमें ये पावर ऑफ माइंड को यूज करना है अपने आप को हील करने को। हमें अपने बॉडी में इन्फ्लेमेशन को घटाना है, पर नॉर्मल इन्फ्लेमेशन नहीं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को घटाना है। और अभी हमारे जो बीमारी है उसका रिलेटेड हमें न्यूरो इन्फ्लेमेशन को घटाना है। हमें अपने बॉडी में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है। हमें अपने बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को भगाना है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी को लिए हानिकारक होते हैं। हमें अपने बॉडी से टॉक्सिन को निकालना है। जितना हम टॉक्सिन को निकालेंगे उतना अपना बॉडी हील होता रहेगा। हमें अपने ब्लड ब्रेन बैरियर को उसको न्यूट्रिएंट्स को पास करने में हेल्प करना है। Our main focus should be proper food and nutrition. Our focus should be gut health. हमें अपने एब्जॉर्प्शन, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो जाता है, तो हमें एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। स्लीप, हमारे नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अच्छी नींद आएगी तो हमारा बॉडी अंदर से हील होता रहेगा। और हमें ध्यान में रखना है, हमें अच्छी नींद आनी चाहिए रेगुलरली, कंटिन्यूसली। हमें अपने डाइट पे फोकस करना है। डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। अगर हम डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बॉडी हील नहीं होगा। मैं अपने बॉडी को, हमने जो हमारे बॉडी न्यूट्रिएंट्स नहीं बना पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हमें उसको सप्लीमेंट के साथ हमें अपने बॉडी को देना चाहिए। मैं तो मेडिसिनल कैनबिस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आप मेडिसिनल कैनबिस ले सकते हो। इट इज ऑन द न्यूरो प्रोटेक्टिव थिंग। एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बॉडी मूव नहीं करेगा तो आपको तकलीफ पड़ेगी। इसके लिए एक्सरसाइज हमें रेगुलर करते रहना है। स्पीच एंड सोलिंग थेरेपी, हमें अपनी स्पीच को सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी और सोलिंग थेरेपी रेगुलर करते रहना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करना है, जिससे हमारी तबीयत में और भी सुधार हो। हाँ, ये देखिए, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये एएलएस का मैंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था कि आप देख सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम कम लेते हैं तो हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनते तभी हमें हमारे बॉडी में ये माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमें इन्फ्लेमेशन घटाना है। आप देख सकते हो, ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करना है। TDP43, mdDNA म्यूटेशन, SOD एग्रीगेशन। एक बहुत बड़ी चीज है एनर्जी मेटाबॉलाइजेशन। अगर आप एनर्जी को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते तो आप एनर्जी कैसे लेंगे? हमारे सेल्स में एटीपी एनर्जी होती है। एटीपी एनर्जी को हमें बढ़ाना चाहिए। उसके में सबसे पहला है टर्मरिक। हमारा जो हम हल्दी पाउडर खाते हैं, हल्दी पाउडर, जो हल्दी पाउडर होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और भी बहुत सारी उसमें फायदे वाली चीज है। उसमें टर्मरिक में एक कंपाउंड होता है जिसको कर्क्यूमिन बोलते हैं। कर्क्यूमिन हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो जो लाकाडोंग टर्मरिक होता है उसमें कर्क्यूमिन की मात्रा 7% से लेके 12% होती है।
हमारे घर पे जो नॉर्मल हल्दी होती है उसमें करक्यूमिन की मात्रा 1% के आसपास होती है। तो हो सके तो आप लाकाडोंग टर्मरिक आप लीजिए। मैंने फाइंड किया है, हमारे योगी जी ने बताया कि लाकाडोंग टर्मरिक उनके उधर कोटा राजस्थान में रिजनेबल प्राइस में मिलता है। अगर आप में से किसी को इसका ना कॉन्टेक्ट नंबर वो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। Curcumin is extracted from turmeric, main healing agent in turmeric, 30 times stronger than raw turmeric, 30 times more effective than raw turmeric. हाँ, आप देख सकते हैं कर्क्यूमिन के कितना फायदा है। यहाँ पे it protects against neurodegeneration and slows down the brain disease progression. आप सभी को करक्यूमिन रेगुलरली लेना चाहिए। करक्यूमिन इज वेरी मच helpful for slowing down the progression. ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊं। ऑस्ट्रेलिया में स्टीवन शैकल करके एलएस रिवर्सल है। स्टीवन शैकल के रिवर्सल प्रोटोकॉल में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। हो सके तो आपको ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी लेना है। ग्रीन टी इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। ग्रीन टी में ऐसे ऐसे फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को और भी सुधार सकते हैं। मैं एवरीडे 1 कप ग्रीन टी रेगुलर पीता हूँ। जिनसिंग बहुत बढ़िया चीज है, अपने ब्रेन फंक्शन को ठीक करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। में और भी उसके फायदे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जिनसिंग कैसे काम करता है और हमारी बॉडी को हीलिंग में कितना कितना फायदा कर देता है। जिनसिंग even helps in the regulation of pro-inflammatory cytokines and also helps in prevention of inhibition of cell death. जिनसिंग के इतने ज्यादा फायदे हैं आप देख सकते हैं। ब्रेन के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, स्किन के लिए, लंग्स के लिए, नर्व्स के लिए, ये अटैक ब्लड थायराइड। इनको बिलोबा हमारे बहुत फायदा करता है। जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से इनको बिलोबा is a natural treatment for Alzheimer, which is again a neurodegenerative disease. गार्लिक पाउडर भी हमें हमारी तबीयत सुधारने में हेल्प करता है, हमारे नॉर्मल इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। लाइकोपीन जो रेड कलर होता है ना, वो कैंसर फाइटिंग एजेंट एंड इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जो टमाटर पे पिंक, ग्रेपफ्रूट पे, पिंक गुआवा पे, वाटरमेलन में, पपाया पे, सभी पे जो लाल रंग होता है
लाइकोपीन उसको लाल बनाता है, लाइकोपीन बहुत फायदा करता है उसके, ये सब डिटेल है। ये बहुत सही लिखा गया है, गुड थिंग्स कम इन रेड पैकेजेस। ओमेगा 3 one of the most important supplement is omega 3। ये हमारे इंफ्लेमेशन को फाइट करने में बहुत हेल्प करता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी को भी कम करता है, आंखों की हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, स्लीप को भी हेल्प करता है, इवन कैंसर के प्रोटेक्शन में काम करता है, प्रिवेंशन। ग्लूटाथाइन बहुत फायदा करता है हमें, ये एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को कम करता है, हमें कभी मसल एंड जॉइंट डिस्कम्फर्ट होता है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है, हमारे लिवर और सेल्स को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, हमारी नींद को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ग्लूटाथाइन को एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को घटाने में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने में हेल्प करता है, अपने अपने हर एक सेल को रिपेयर करने में ग्लूटाथाइन हेल्प करता है। एसेंशियल एमिनो एसिड आपको भी पता है हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं आते और हमारे मसल के पास नहीं जाते, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में एसेंशियल एमिनो एसिड बहुत हेल्प करता है, मसल ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, फैट मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर रेगुलेशन बहुत फायदा करता है एसेंशियल एमिनो एसिड। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अभी हम इन्होंने कीटो डाइट का बात किया था और डीएनए प्रोटोकॉल भी है, तो टिश और पेटिश और स्कॉट ने हमें कीटोजेनिक डाइट के बारे में भी बताया। तो ये कीटोजेनिक डाइट हमारे एटीपी एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है, आप देखेंगे उसके लिए सीओ ग्लूटेन माइटोक्यून एटीपी एनर्जी बढ़ती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर, ये साइंटिफिक है, एल-कार्नाटाइन हमारे सेल में कैसे काम करता है। एल-कार्नाटाइन हमारे ट्रांसपोर्ट करता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे उसको छोड़ा गया है और बाद में उसमें एनर्जी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरे पिक्चर में पूरा डिटेल दिया हुआ कि एल-कार्नाटाइन कैसे हेल्प करता है हमारी एटीपी एनर्जी को बढ़ाने में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर और सेल डैमेज को रिपेयर करने में। Increases endurance, prevents muscle damage, boosts brain function. These are some of the benefits of L-carnitine. B12, methylcobalamin. B12 is very important for our body. DNA synthesis में हेल्प करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, मैसेंजर सब्सटेंस, न्यूरो हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर में। अगर आपका B12 कम है तो आपको B12 अपना मैनेज करके प्रॉपर
B12 को कंट्रोल करके उसको B12 में आपके बॉडी में प्रॉपर B12 होना चाहिए। अब देख सकते हो B12 के फायदे के बहुत सारे हैं। आप ये देख सकते हो B12 helps in normal functioning of our body। ये करक्यूमिन का और एक ये स्लाइड है जो मैंने पहले ऐड नहीं किया था। करक्यूमिन हमारे ALS बीमारी में इतना हेल्प करता है। आप राइट में देखिए NF KB activation, SOD1 aggregation, NRF2 ARE pathway, mitochondria dysfunction को ठीक करने में हेल्प करता है। Curcumin is one of the most important superfood supplement। ये विटामिन और मिनरल्स के फायदे हैं। अब इस स्क्रीन को पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये जो सप्लीमेंट है, अगर आपको ये सप्लीमेंट चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ से कैसे लेना। Now coming back to CO-Q10, coenzyme Q10. Coenzyme Q10 is a major energy molecule and antioxidant। ये हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। CO-Q10 पढ़ सकते हो। न्यूरल एंड ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी इन्होंने स्टैटिन के बारे में बोला था। स्टैटिन ड्रग्स, स्टैटिन थेरेपी में ये बहुत काम आता है। कोएंजाइम Q10 का मैकेनिज्म आप देख सकते हो। उसका मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शन, बाद में फिजियोलॉजिक बेनिफिट आप देख सकते हो। इन्फ्लेमेटरी बर्डन को कम करता है और क्लिनिकल बेनिफिट में आप देख सकते हो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में सबसे बढ़िया हेल्प को करता है कोएंजाइम Q10। लाइकोपीन के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए पहले। ओमेगा 3 के भी बेनिफिट आपको बता दिए। हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है L-arginine। L-arginine is very important for brain function। अर्जिनाइन हमारे ब्रेन में, अपने बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करता है, तो हेल्प करता है। हमारे नसों को बड़ा करने में हेल्प करता है। इट हैज बीन opening the blood vessels open wide, allowing blood to transport oxygen and important nutrients to the brain, which may enhance memory and cognitive function। तो L-arginine बहुत आपको हेल्प करता है। ये जो मैं दूसरा सप्लीमेंट है मैंने उसका ट्रायल चालू किया। आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ से आप कैसे ले सकते हैं। मैं तो रेगुलर ये सब सप्लीमेंट ले रहा हूँ। ये मेडिसिनल कैनबिस है जो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं रखते। इनका फायदा बहुत जबरदस्त है। ये देखो, आप पढ़ सकते हो। ब्लड ब्रेन बैरियर को
पार करने में हेल्प करता है, न्यूरोडिजेनरेशन को कम करता है, अरे पूरे बॉडी में बहुत हेल्प करता है कैनबिस। देख एंटरिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, गट ब्रेन एक्सिस को भी ठीक करता है। ये पूरा मेरा लेटेस्ट रिसर्च है जो मैं आपके सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसमें जो कैनबिस है वो इतना हेल्पफुल है कि हमारे पूरे बॉडी में न्यूरो इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देखिए न्यूरो इन्फ्लेमेशन ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है। ह्यूमन बेसल गैंग्लिया जो डीजनरेशन होता है ब्रेन में उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डेथ को स्टॉप करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देखिए न्यूरो इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, इलेक्ट्रिक लॉस सेल डेथ को मरने से बचाता है, ब्रेन एट्रोफी में भी हेल्प करता है, एट्रोफी को भी कम करने में हेल्प करता है। ये अभी लेटेस्ट रिसर्च है जिसके बारे में मैं काम कर रहा हूँ। वाई लाइपोसोमल सप्लीमेंट, नॉर्मल सप्लीमेंट तो मैं ले रहा हूँ 3, 3.5, 4 साल, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा कि लाइपोसोमल सप्लीमेंट का इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा है, हमें सुपीरियर डिलीवरी फॉर्म में मिलता है, हमारे न्यूट्रिएंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, उसका रिड्यूस साइड इफेक्ट होते हैं, एनहांस एब्जॉर्प्शन और लाइपोसोमल होता है सप्लीमेंट, उसका एब्जॉर्प्शन नॉर्मल सप्लीमेंट से ज्यादा होता है और लाइपोसोमल हम इजीली ले सकते हैं। लाइपोसोमल सप्लीमेंट कोई कोई ऐसे है जो आप फीडिंग ट्यूब से भी आप ले सकते हैं। ये कैसे काम करता है, पहले फॉर एग्जांपल एक लाइपोसोमल विटामिन सी में काम कर रहा हूँ, आप उस पे पढ़िए कैसे काम कर, अरे जो गट की लाइनिंग है, अरे गट लाइनिंग में आप देखें ये विटामिन सी अंदर है, फॉस्फोलिपिड है यहाँ पे, लाइपोसोम है यहाँ पे, तो ये ना हमारे गट की लाइनिंग को, ये जो लाइनिंग खराब होती है उसको बचाने में हेल्प कर। एक सप्लीमेंट है आर आर एल है, आर डैश एल है, अल्फा लिपोइक एसिड, ये एक फैटी एसिड नेचुरली जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, पर हमें अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ता है क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो चुका होता है, तो हमें अलग से आर एल लेना पड़ता है। हम फूड से ले सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल से ले सकते हैं, जो मीट खाते हैं वो मीट से भी ले सकते हैं। एंड आर एल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। ये एसेंशियल हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि हमारे बॉडी में इसका फायदा ही फायदा है। ये आप खाली पेट ले सकते हो,
एस्ट्राजेनेटिन। ये सप्लीमेंट का नाम है एस्ट्राजेनेटिन। ये बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है। ये हमारे वुंड को हील करने में हेल्प करता है। हेपेटो प्रोटेक्शन, ऑस्टियो प्रोटेक्शन। आप देख सकते हो एस्ट्राजेनेटिन के फायदे क्या है, कितने कितने। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। अभी मैं आप सभी के क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा। नाउ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। So thank you Tish for being with me. I hope Okay. you saw my presentation. Yes, I did. And Pinnakin, you did the 47 steps in 45 minutes. Thank you. Thank So- you so much. So you can take that whole, there was a beautiful presentation. You could probably divide it into 47 steps, that whole presentation, but you did really well. It was great. So basically what I have done is I have shared all my research, all the supplements that I am taking. And apart from that, even I've been able to get a 40-50% discount for my group from all the supplement manufacturers. Good for you. That's great. So yeah, so Thank you. that was really good. Thank you so much. It was great. It was really good. Very, very thorough. You explained the science behind it. So I feel bad we took up so much time at the beginning, but let me run because I am late for another meeting. So let me go back to my other meeting, okay? Yeah, Say hi. thank you and Scott's gonna say namaste. goodbye too. He just, Yeah, say- thank you and namaste to both of you. Namaste. Thank you for Namaste. your time. okay, bye. Yeah. Yeah, bye bye. Take care. तो अभी आप सभी को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एक मिनट, आप एक के बाद एक आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जिनको कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। तब तक मैं चैट में देख लेता हूँ। यस मंजुनाथ जी, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब सर। ये सेकंड इनिंग आप पक्का जीतेंगे। Thank you, Sukhwan sir. Thank you so much. Sabri ma'am, I will share all the details with you personally. You can work it out on your symptomatic level. बोलिए विनायक जी। आपने बहुत बढ़िया किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं एक कहना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे दिखाए प्रोडक्ट, तो कैसा लेने का, क्या प्रमाण है, कितना लेने का, कितने दिन तक लेने का, इसका हमें डिटेल है। विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे सप्लीमेंट है, लेकिन कैसा लेने का, कितना लेने का। अभी विनायक जी आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। ये है ना, सप्लीमेंट अलग अलग लेने को जाएंगे तो अपनी कमर टूट जाती है। इसलिए मैंने है ना ये सप्लीमेंट का भाव ढूंढा है, तो मैं अपने पे ट्रायल कर रहा हूँ।
और वो क्या है, मिक्स ऑफ मल्टीपल, एक मल्टीपल जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसको मैं एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड बोलता हूँ। बाद में एक होता है अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लान, बाद में और एक एमिनो एसिड प्लान, कर्क्यूमिन तो अलग से देता हूँ। तो जो भी चीज ले रहा हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, आपको कैसे लेना है। अभी जैसे मैं ले रहा हूँ अपने बॉडी के लिए, मैं आपने देखा है मैं अपने आप को धीरे धीरे हील कर पा रहा हूँ। मेरी भले मैं चल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं अपने बॉडी को हील कर रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ रहा है मेरी आवाज में सुधार है, मेरा सोनिंग इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा मेरे जो कॉग्निटिव लेवल है, ब्रेन फंक्शन और भी बेटर हुआ है। मेमोरी में तो हमारे घर में मैं सब लोग बोलते हैं मेरी मेमोरी बहुत जबरदस्त है। तो वही सब चीजें मैं रिसर्च करता हूँ, आप मेरे खुद के लिए भी और आप सभी के लिए। वो ये ध्यान में रखना है, हमारे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यान में रखना। ये आप सभी के बॉडी टाइप अलग है, बॉडी का इम्यूनिटी अलग है, इसलिए सभी के लिए सभी चीजें नहीं चल रही। आपका डाइट अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, आपका मेंटल पावर अलग है। और विनायक जी आप बहुत दिन से आए नहीं, तो हमें हमिंग कराए नहीं। हो सके तो अभी आप आइए, हमिंग हाँ, कराइए। अभी आऊंगा, अभी हो गए, ट्रीटमेंट हो गए। धन्यवाद। तो मैं आप सबको बता दूंगा विनायक जी, ये जो भी सप्लीमेंट है, 8-10 सप्लीमेंट है, आपको मैं बता दूंगा आपको कैसे लेना है। आपको सप्लीमेंट कैसे कैसे कब लेना है और कितने क्वांटिटी में लेना है। अगर आपको डिस्काउंट पे चाहिए तो मैंने कंपनी वालों से बात की है, आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मैंने बताया ना 40-50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो वैसे आप सभी को मिल जाएगा। जिनको मैं जिनको चाहिए आप। टर्मरिक आपने जो कुर्कुमिन है ना, वो लेता हूँ, उससे फायदा हुआ है। हाँ, जो कर्क्यूमिन में पाउडर, टर्मरिक पाउडर मैंने कोटा दे लिया, अभी 1.5 साल से मैं वही ले रहा हूँ रोज सुबह पानी में। ओके। तो वो तो पक्का फायदा कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी चैट में भी मैं पढ़ रहा हूँ इस सप्लीमेंट के बारे में। यस मंजुनाथ जी, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो सर, आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं जल्दी आपके साथ ट्रैवल करने वाला हूँ, आप चिंता मत करो। थैंक यू सर। ओके ओके सर मंजुनाथ जी, यू कैन अटेंड अनदर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर। रितु मैम, ये मैं शेयर करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मैं शेयर करूंगा, ये मैं आपको वापस बता दूं, हर एक का सिम्टम अलग है, हर एक का अभी कंडीशन अलग है, सभी सभी लोग सब चीज नहीं ले सकते। और ये भी सप्लीमेंट में भी हमें ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट है ना, आप ज्यादा मात्रा में भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते। आपका जो आपका विटामिन डी है, विटामिन B12 है, वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। आपकी नींद मायने रखती है। आपका जो गट हेल्थ है, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए, गट हेल्थ बहुत मायने रखा। उसके अलावा मैंने और भी देखा कि इमोशन प्ले अ मेजर रोल हमारे लाइफ में। इमोशन, अगर हम सैड हैं, अगर हम नेगेटिव हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, तो इमोशनली हम डाउन हो जाते हैं और हमारी तबीयत और भी खराब। आपको ये भी ध्यान में रखना। एक मिनट मैं और चैट में देखना हूँ। हाँ,
हाँ, वेदर का भी इम्पैक्ट होता है विकास जी, वेदर का भी इम्पैक्ट होता है। वेदर अभी जैसे विंटर में है, विंटर में हमारी तबीयत डाउन होने की संभावना होती है। वेदर हमें बॉडी में भी इफेक्ट करता है। मीट चपाती मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ निखिल भाई। मैं अभी ज्यादातर ज्वार और बाजरे की रोटी खाता हूँ, कभी कभार गेहूं की चपाती खा लेता हूँ। अच्छा, मिलेट, मीना जी मिलेट बहुत अच्छा होता है। मिलेट इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। और रेगुलरली आपको है ना, एक बात बता दूं, मैं जैसे रोटेशनल थेरेपी करता हूँ। मैं कभी ये खाता हूँ 4-5 दिन में, 5-6 दिन में एक बार गेहूं की रोटी भी खाता हूँ। अपने बॉडी को है ना रोटेशन मिलना चाहिए। Nidhi ji, I think you have wrote something wrong. My brother is lactose intolerant होना चाहिए। अगर lactose tolerant है तो कोई वांदा नहीं, he can have dairy products। टोफू नहीं है तो पनीर तो पक्का मिलता है। ये तो आप तो हर रोज अमेरिका से टोफू बेच सकते हो ना अपने भाई को। तो हर रोज एक बार कुरियर का तो उनको हर रोज मिलता रहेगा। ये चैट में जो जो इम्पोर्टेंट बातें पैट्रिशिया और स्कॉट ने लिखी है, आप सब देख लीजिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप सभी को और भी कोई किसी को क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो अभी मैं मीटिंग एंड करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज मीटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी और कुछ सप्लीमेंट है इसके बारे में रिसर्च करना, आपको आगे चल के मैं उसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू असुमन सर, थैंक यू बाबा जी, और आप और एक चाय। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप सब हंसते रहिए, खेलते रहिए और गुनगुनाते रहिए। मैं जल्द आपको मिलूंगा मंडे को 4:30 बजे फिर थेरेपी में। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you Pinakin bhai. थैंक यू बहुत बहुत नवनीत भाई, थैंक यू सो मच सर।